All in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari, and I'm here with a new video of Mission MPPSC 2020, Unit 10, Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, which is a constitutional body as it is given in Article 148 of our Indian Constitution. So, one thought or one line which is said by Dr. B.R. Ambedkar, I am of the opinion that this dignitary or officer is probably the most important officer in the Constitution of India. He is one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by Parliament in the Appropriation Act. This is what Dr. B.R. Ambedkar said for the CAG. CAG, that is Comptroller and Auditor General. Basically, it should be Controller and Auditor General. बट जो वर्ड लिखा है कंट्रोलर, उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, इसलिए ज़रूरत नहीं समझी उसको चेंज करने की और उसको एज इट इज़ रहने दिया. लेकिन हिंदी में अगर उसको हम पढ़ते हैं तो नियंत्रक एवं लेखा बोलते हैं. फाइन. बैकग्राउंड अबाउट कैग अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो कैग इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट and chief guardian of public purse. It is the institution through which the accountability of the government and other public authority, all those who spend public funds, to parliament and state legislature and through them to the public is ensured. Sri Rajiv Maharshi is the incumbent CAG of India. That you should know. Fine. Now, about the background of this authority. In 1753, Indian Audit and Accounts Department was established. In 1858, Accountant General Officer established. इनका पहला नाम था एडमंड ट्रम्प, जो पहले थे. नाउ 1860, सर एडवर्ड ट्रमोंड अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल. गेटिंग. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास हुआ था, उसमें ऑडिटर जनरल फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, उनको फ्री कर दिया था गवर्नमेंट कंट्रोल से. मीन्स अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, जो वो कहेंगे वही फाइनल होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन फॉर प्रोविंशियल ऑडिटर्स was passed. Now provided the responsibility of Auditor General and audit functions also. Now in 26th of January 1950 appointed a Controller and Auditor General by the President of India in Article 148 of our Indian Constitution. Getting. Now establishment of accounting board, one member and three members, one chairperson or chairman and three member appointed by CAG only. In 1971, Comptroller and Auditor General, that is Duties, Power and Conditions Service Act of 1971 was passed. Now, the act gave CAG the responsibility of both accounting and auditing for the central and state government. Then CAG exempted from accounting functions after amendment of CAG Act 1976. 1976 में एक और एक्ट पास हुआ जिसको CAG Act 1976 कहते हैं. उसमें जो कैग था उसको एग्जाम्ट कर दिया अकाउंटिंग फंक्शंस से. फाइन. अब जो लिखा है मैंने वो देख लेते हैं. दिस वाज अबाउट द बैकग्राउंड. ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल and was established in 1858. That I have already told you. The year of the British took over administrative control of India from the East India Company. 1860 में Sir Edward Drummond was appointed as the first Auditor General. That I have already told you. Meanwhile, after some restriction, the Auditor General of India came to be called the Auditor and Accountant General of the Government of India. Means Government of India के लिए वो काम करेंगे. Now, 1866 the position was renamed Comptroller General of Accounts, and in 1884 it was designated as Comptroller and Auditor General of India. Under the Government Act of 1919, the Auditor General became independent of the government as statutory backing was given by for the position. The Government of India Act 1935 further strengthened the position of Auditor General by providing the Provincial Auditor General in a federal setup. The Act also described the appointment and service procedure and gave a brief.
overview of the duties of the Auditor General of India. The Accounts and Audits Order of 1936 provided detailed accounting and auditing function of the Auditor General. This arrangement remained unchanged until India's independence in 1947. आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 148 ऑफ द 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provided for the establishment of Comptroller and Auditor General to be appointed by the President of India. CAG jurisdiction was exempted to Jammu and Kashmir in 1958. In 1971, the central government enacted the Comptroller and Auditor General, that is Duties, Power and Condition of Service Act 1971 was passed. The act made CAG responsible for both accounting and auditing duties for central and state government. दोनों के लिए उन्होंने बनाया कि आपको क्या काम करना है, आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ड्यूटीज देखनी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी. बट 1976 कैग वॉज रिलीव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, मीन्स इनको सिर्फ क्या करना है, ऑडिटिंग ही करना है. CAG was undergone rapid computerization and modernization since the 1990s, and pervasive nature of Indian corruption has kept CAG vigilant, and it has audited and investigated some of the worst and most controversial corruption scandals in India history. Now, we'll have a comparison with Britain CAG. Now, if we compare it with the Britain CAG, CAG of India only performed the role of an Auditor General, not the Comptroller, but in Britain it has the power of both Comptroller as well as Auditor General. In India, the CAG audits the accounts after the expenditure is committed, that is ex post facto. In UK, no money can be drawn from the public exchequer without the approval of the CAG. In India, CAG is not a member of a parliament, while in Britain, CAG is the member of House of the Commons. There are some certain information which you should know, I think, as the exam point of view. Examination के हिसाब से जो important है वो मैं आपको information दे रहा हूँ. Information of CAG is given in Article 148 of the Constitution, Part 5th, Chapter 5th, Article 148 to Article 151. There is a whole thing, Comptroller and Auditor General of India is given there. नेचर कैसा होगा इसका, तो इंडिपेंडेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. मेजर फंक्शन इसका क्या होगा, मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट, दैट इज गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस. इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो यू विल से 1858. बट करंट फॉर्मेट जो भी चल रहा है वो कब का चल रहा है, 26 जनवरी 1950. गेटिंग. हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर ऑफ दिस इज इन न्यू दिल्ली, सेम एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑफ CAG 2. फर्स्ट चीफ इसके कौन थे, तो एडवर्ड ड्रमोंड थे 1860 से 1862 तक. फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो कौन थे, वी नरहरि राव. ये कब से कब तक थे, 1948 टू 1954. करंट कौन है, तो गिरीश चंद्रा मुर्मू इसके करंट चेयरपर्सन हैं. 14th CAG 8 अगस्त 2020 को ये बने थे. हमारे यहाँ के अभी के CAG कौन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, गिरीश चंद्रा मुर्मू. अदर जो बाकी के 3 लोग हैं, विनोद राय, शशिकांत शर्मा एंड राजीव महर्षि आर द 3 अदर CAGs. नो वुमेन एट, आज तक कोई भी वुमेन नहीं बनी. अगर क्वेश्चन आ गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, 3 वुमेन के नाम दिए, चौथा दिया नन ऑफ दिस, तो आप तुरंत नन ऑफ दिस पर टिक करेंगे. डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बोल देता हूँ, द CAG विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It will be one of the defender of government of India in the democratic system. These defenders include the Supreme Court, Establishment Election Commission and UPSC. Getting? Now, there are constitutional provisions. Constitutional provisions क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ, that we'll going to see shortly. 148 article broadly deals with the CAG appointment, oath and condition of services. ये 3 चीज़ दी होंगी. CAG की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगी, ओथ इसकी शपथ क्या होगी, और सर्विस क्या करेगा. In Article 149 deals with duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India. Article 150 says that the accounts of the Union of the state shall be kept in such form as the President may, on the advice of CAG, prescribed. Getting? Article 151 की अगर बात करें, says that the report of the Comptroller and Auditor General of India
relating to the accounts of the union shall be submitted to the president. President साहब को submit करेंगे. Who shall cause them to be laid before each house of the parliament. फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस में प्रेजेंट करेंगे. आर्टिकल 279 क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स is ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India whose certificate is final. जो वो कहेंगे वही चीज़ फाइनल होगी. थर्ड शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी शेड्यूल में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 of the third schedule of the Constitution of India prescribed the form of oath क्या होगी, or affirmation to be made by the judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India at the time of assumption of office. According to sixth schedule, the accounts of the district council or regional council should be kept in such form as CAG with the approval of the president prescribed. In addition, these bodies accounts the audited in such manner as CAG may think fit, and the report relating to such accounts shall be submitted to the governor who shall cause them to be laid before council. So I hope it is clear. 148 में सिंपली कहा गया है there will be a CAG of India. अपॉइंटमेंट उसका प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव उसको सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाता है वैसे निकाला जाएगा. ये आर्टिकल 148 1 में दिया है. आर्टिकल 148 2 में क्या दिया है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट एज पर थर्ड शेड्यूल जो भी हमने देखा. आर्टिकल 148 3 में क्या दिया है, सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन जो कि बाय पार्लियामेंट इट शुड बी डिसाइडेड. नो अनवायबल चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. पार्लियामेंट देन पार्लियामेंट रूल बनाया है अकाउंट्स जनरल एक्ट दैट इज 1971. उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है, उसके सेक्शन 3 में लिखा हुआ है सैलरी सेम एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही उनकी सैलरी होगी. सुप्रीम कोर्ट के जज की एट प्रेजेंट सैलरी कितनी है, 2.5 लाख. फाइन. सेक्शन 4 में दिया है टेन्योर. उसका टेन्योर कितना होगा, 6 ईयर होगा और 65 ईयर्स जो पहले आ जाए. सेक्शन 4 में दिया है रेजिग्नेशन, जो कि रेजिग्नेशन दिया जाएगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के हाथ में दिया जाएगा. आर्टिकल 148 फोर्थ में दिया है विल नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का. आर्टिकल 148 फिफ्थ में दिया है रूल्स ऑफ कैग दैट इज प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कैग, कंसल्टेशन विद कैग. आर्टिकल 148 6 में दिया है एक्सपेंसेस वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन. आर्टिकल 149 में दिया है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग जो कि कहाँ पर है, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट एक्ट 1971 में जो पास किया था उसमें. आर्टिकल 150 में दिया है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स फॉर यूनियन एंड स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग. गेटिंग, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंस ऑफ कैग. कैग की इंडिपेंडेंस. There are several provisions in the Constitution for safeguard the independence of CAG. CAG is appointed by President by warrant under his hand and seal and provided with tenure of 6 years and 65 or 65 year of age whichever is earlier, जो पहले आ जाए. CAG can be removed by the President only in accordance with the procedure mentioned in the Constitution, that is the manner same as removal of Supreme Court judges, not the Chief Justice of Supreme Court. He is ineligible to hold any office either under the government of India or of any state once he retires or resigns as a CAG. CAG की पोजीशन से वो अगर रिटायर हो जाते हैं या खुद रिजाइन देते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी काम नहीं, कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते. हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरीज में कोई भी कमी नहीं की जा सकती, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते. हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द कंडीशन of service of persons serving in Indian Audit and Accounts Department are prescribed by the President only after consulting him. The administrative expenses of the office of CAG, including all salary, allowances and pensions, are charged upon the Consolidated Fund of India, is not subject to vote. Getting, that is not subject to vote. Now, important thing, functions and powers of the CAG. क्या इनके फंक्शन होंगे और क्या इनके पावर्स होंगे. CAG derived its audit mandate from different sources like Constitution, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 में इसके पावर्स एंड फंक्शंस दिए हुए.
The Comptroller and Auditor General, that is duties, power and condition of service Act 1971, important judgments देंगे, instructions of Government of India, regulations on audit and accounts 2007. These are the things जहाँ से इनके सर्विसेज के बारे में हमें पता चलता है. CAG audits the accounts related to all expenditures from the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of each state and union territories having a legislative assembly. सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं. कहाँ कहाँ की? दो जगह है, पुदुचेरी एंड दिल्ली. एक और हो गया है जम्मू एंड कश्मीर. He audits all expenditures under the contingency fund of India and the public account of India, as well as contingency fund and public accounts of each states as well. He audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheet and other subsidiary accounts kept by the Department of Central Government and the state government. He audits the receipt and expenditure of all bodies and authority substantially financed from the central or state revenues, government companies, other corporates and bodies when so required by related law. He audits the accounts of any other authority when requested by the president और गवर्नमेंट एग्जाम्पल लोकल बॉडीज. अगर लोकल बॉडीज का भी इनसे ऑडिट करवाना है तो कब करेंगे? जब गवर्नर या प्रेसिडेंट इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा भी कर दो, तो वो लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल पार्टीज, इनका भी काम कर सकते हैं, इनका भी ऑडिट बना सकते हैं. ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शंस of the form in which the account of the center and state shall be kept. He submits his audit report relating to the account of the center to the president. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो किसको सबमिट करते हैं? वो अपनी रिपोर्ट सेंटर की है तो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे. हु शैल इन टर्न प्लेस दैम बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट to the governor, who shall in turn place them before the state legislature. CAG also acts as a guide, friend and philosopher of the पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है दैट इज PSC, उसके लिए वो एक्ट करता है एज अ गाइड, फ्रेंड एंड द फिलोसोफर. गेटिंग? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैग एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी. कैग और पैक के बीच में क्या है? ये दोनों होते क्या हैं? पैक इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्रिएटेड अंडर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से बनाई गई थी. CAG audit reports are handed over to the PACS, PAC, that is Public Account Committee को दिया जाता है at the center and at the state. Three CAG reports, that is audit report on appropriation accounts, audit report on financial accounts and audit report on public sector undertaking are examined by PAC. At the central level, these reports are submitted by CAG to president को दिया जाता है अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, who makes them to be laid in front of parliament. CAG also assists the committee in its deliberation by preparing a list of the most urgent matter which deserve the attention of the PAC. He also helps in making the actions of the committee clear to the witnesses and in making the action of the government clear to the committee. CAG position is sometimes one of interpreter and translator, explaining the official's view to the politicians and vice versa. The responsibilities of the CAG does not end here. He has to watch whether the corrective action suggested by him हैज़ बीन टेकन और नॉट. उनके द्वारा जो करेक्टिव डिसीजन जो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, वो चीज़ें उनके सजेशंस लिए माने गए हैं या नहीं माने गए, ये भी वो वॉच डॉग करेंगे. इन केस वेदर इट हैज़ नॉट बीन टेकन, ही रिपोर्ट्स द मैटर टू द पैक. वो पैक को तुरंत बताते हैं अगर उनकी बात नहीं ली जाती है, विच विल टेक अप द मैटर. वो तुरंत उस मैटर को लेंगे. अब इसको कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन सी फॉर द कैग. इन प्रेजेंट टाइम audits are getting complex because forms of corruption and maladministration extremely difficult to detect. Beside the historic task of keeping a close watch on the central and state government, CAG are now auditing several public-private partnership, that is PPP projects also. In this context, CAG of India has suddenly landed in the midst of unprecedented opportunity and challenges.
No criterion or procedure has been prescribed either in the constitution or in the statute for the appointment of CAG. This has been the sole power to the executive to appoint a person of their choice as the CAG. CAG को choose कर सकते हैं. This goes against the international best practices prevalent across the world. The CAG has the authority to inspect any government office and to call for any accounts. However, in practice, the supply of record is often denied. Moreover, usually inordinately delayed and more often than not. Crucial documents are supplied to the auditors at the end of the audit program with the sole objective of obstructing meaningful audit of those crucial records. Just like the citizen's right to get the information within a month under RTI Act 2005, auditors should be provided access to records on priority basis within 7 days. Failing which heads of departments should be required to explain the circumstances that cause the delay. अगर कुछ डिले होता है 7 दिन के बाद अगर रिपोर्ट मिलती है तो वो उस डिपार्टमेंट के हेड से पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट मतलब जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उसमें देरी क्यों हो गई. In 2015 an all India conference of PAC of Parliament and State Union Territories legislature discussed the need for complete independence of the CAG, making it a part of the PAC, like in UK and in Australia. It also called the prior consultation with the chairman PAC before appointment of the CAG and consequentially need to amend the CAG Act to this effect. Though the Indian Constitution provides for a 6-year term to the CAG, the cap of 65 years of age has been reducing the actual terms of successive CAGs in the recent rules. Shorter the tenure works as an impediment to the independent and proper functioning of the institution due to lack of continuity of the leadership and lost expertise. Internationally, the CAG of the UK and the Comptroller General of US has 10 and 15 years of terms respectively. Means कहा जा रहा है कि UK अगर हम UK और US के कैग की बात करें तो वहाँ पे 10 से 15 साल का टर्म दिया जाता है. इतना साल इसलिए दिया जाता है क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहे. दूसरा आएगा फिर से वो चीज़ शुरू से शुरू करेगा तो लंबा समय चाहिए एक कैग को बढ़ने के लिए. The work of audit of accounts of the union and of the state is actually done by the officers and staff of the IA and AD. However, no statutory recognition has been given to the work of the IA and AD in India, as against National Audit Office of the UK. The recognition of the IA and AD as the statutory body with delegation of the power to lower functionaries on the pattern of IT Act will improve the quality and audit and give credibility to the work done by the officers and staff of the IA and AD, thereby leading to greater impact and better outcome. Some of the audit of CAG in recent times have attracted criticism due to exaggerated loss estimates or outlandish figures. To avoid such allegations, CAG should follow rigorous standards so that the integrity of audit is not affected by extraneous considerations. Now, reforms suggested by Vinod Rai, there is a former CAG, हमारे यहाँ जो former CAG थे विनोद राय, उनने कुछ suggestions दिए हैं. Reforms किस लिए suggestions दिए? Bring all private public partnership, that is PPPs, Panchayat Raj Institute and government funded societies within the ambit of the CAG. मतलब CAG के द्वारा ही उनका audit बनाया जाए. CAG Act of 1971 should be amended to keep pace with the change in governance. A collegium type mechanism to choose a new CAG on the lines of selecting a chief vigilance commissioner, that is CBC, should be taking place. I hope there are certain more points. From climate change to PPPs, there are dramatic changes happening in the way government funding and public goods are exploited. CAG has to change its audit mechanism in this context. CAG has to prepare itself
to audit issues like implementation of sustainable development goals and the goods and services tax. कैग खुद ये प्रिपेयर करे, इसके लिए ऑडिट प्रिपेयर करें. इन द वेक of the big data revolution, CAG came out with a big data management policy in 2016 and also established a center for data management and analytics in Delhi. This is welcome step. In 2017, CAG of India hosted a Commonwealth Auditors General Conference, leveraging technology in public audit and environment audit were the two themes of the conference. Conference helped in fostering partnerships amongst Commonwealth countries for capacity development in public audit. CAG successfully audited the UN headquarters, which involves multifarious and complex operations. It shows the credibility of Indian CAG. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. If not, अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम्स, और आप ट्विटर में भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और आप चाहे तो टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. टिल देन, थैंक यू.